Okay, so ma'am, we are live now. I'll begin in 2 to 3 seconds. Let's just have the guess. Your voice is breaking. Am I audible? Yeah. Okay, so a few guests have joined. A few joined, and then we'll start. Okay, shall we start? Please go ahead. Yeah. Um, Firstly, hello and welcome everyone on the Pink Talk show organized by one and only Pinkish Foundation, and I'm your host Purnima Chhabra. So, first of all, I would like to welcome to all the people who are connected with us and have joined our session today. Welcome. And now, before moving forward with the session, I would like to introduce you all to our special guest today, Dr. Sheetal Agarwal. Dr. Sheetal Agarwal is a gynecologist and an obstetrician. She has an MBBS, a DNB, and an MNAMS. I'm also proud to announce that she has over 24 years of experience in this field, and currently she is based as one of the best gynecologists in Delhi. And ma'am, you're welcome, and we are pleased to have you today with us. Well, thanks, Purnima. I'm honored to be on a guest at Pinkshi. It is such a beautiful platform, and I used to wonder when you are going to invite me to for your talk show, and we can really go around and have so much to discuss. And the topic that you have selected is awesome. I'm just dying to get started, Purnima. Thank you so much, ma'am. It's a pleasure to have you with us. It's a proud moment for us too. Thanks, dear. So, so let's talk about the topic of the day. So, ma'am, if I say कि periods या menstruation एक book है, okay. So आज का हमारा टॉपिक उसी बुक का एक लास्ट चैप्टर है, उस बुक का क्लोजर है, and so yes, it's the topic about menopause. So is it just like periods हमें suddenly start हो जाते हैं when we hit puberty, ऐसे ही एक certain point of time पे हमारी लाइफ में बेसिकली अराउंड 45 to 50 years of age मेनोपॉज भी हमारे दरवाजे पे दस्तक एक दे ही देता है. So I think after living in a certain way for so many years, women जब women इस सिचुएशन को फेस करती है, सडनली एक चेंज को फेस करती है अपनी लाइफ में, so they get a little bit tensed, they get a little bit stressed, and a lot of women go through depression too, because they feel a lot of changes in their body, in their behavior, and उन्हें एक uncomfortable सी feeling वो feeling होती है. सो आई थिंक कि आज के हम सेशन में उन्हीं कुछ डाउट्स को, उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, उन्हीं उसी डर को दूर करेंगे, एंड प्रोबेबली टॉपिक का एक आंसर ढूंढेंगे दैट मेनोपॉज इज इट दैट बैड. Good. सो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करते हैं, एंड आई होप कि जितने भी ऑडियंस के मन में हमारे डाउट्स हैं या जितने भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए. Okay, so moving forward, firstly, before beginning with the session, I would like to announce that after the session, we have two awards for the audience. One, that out of all the questions जो हमारे audience हमसे पूछती हैं, उन questions में से मैम आप हमें बताएंगे कि आपको कौन सा question सबसे ज्यादा favorite लगा, या कौन से Good. question ने आपको सबसे ज्यादा influence किया, and that will be the winner of our question. सेकेंडली हमारे मिस्टर रेफल आगे आएंगे एंड वो हमें बताएंगे कि हमारे कमेंट्स के विनर आज कौन है. सो ऑडियंस प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक टू नो हु इज द विनर एंड टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द सेशन. Okay, so ma'am, my first question to you is about you, that how you got into this particular field and why did you chose to be a gynecologist out of all the professions? Well, we are two brothers and one sister. My father was working in WHO. He's no more now.
एंड देयर इज नो डॉक्टर इन माय फैमिली। तो मेरे डैडी का ये एक सपना था कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, लाइक इट वाज हिज ड्रीम कि उनकी डॉटर शुड बी अ डॉक्टर। उस टाइम पे कोचिंग होती थी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 85 86 1985 86 कोचिंग क्लासेस होती थी, बट मेरे माय पेरेंट्स वर वेरी स्केयर्ड टू सेंड मी टू कोचिंग क्लासेस। दे सेड तुम घर में बैठ के पढ़ो, कोचिंग में नहीं जाना, तुम्हें जो किताब चाहिए हम ला कर देंगे। सो टू फुलफिल माय फादर्स ड्रीम मैंने अपनी 12th में बहुत मेहनत करी, एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट सिलेक्टेड इन एमबीबीएस। एंड मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी, मुझे आई सिलेक्टेड इन महाराष्ट्र, मैं वर्धा गई थी एमबीबीएस करने, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि घर की लड़की को इतनी दूर फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं। देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रेशर एट दैट टाइम आल्सो, रिलेटिव्स का, सबका, कि तुम बेटे तो तुम्हारे दिल्ली में पढ़ रहे हैं और तुम अपनी बेटी को इतनी दूर भेज रहे हो। बट माय फादर वाज वेरी एडमेंट, ही सेड नो, आई हैव टू, मेरे को अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। And you know, it was my, like मुझे भी था कि when my father is doing so much, so I have to fulfill his dream. So while doing my MBBS, that was in my labor posting, my final year in labor posting, I saw a lady laboring. She was about to deliver, and when I saw that the baby came out, and that, you know, उसकी आंखों में जो मैंने चमक देखी, and that calmness on her face after the delivery, I realized this is the best profession, you know, one can be. आप दो जिंदगियों के साथ हो, एंड दैट जो खुशी आप एक, यही एक फील्ड है जिसमें पेशेंट को खुशी होती है आफ्टर द प्रोसीजर, डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, पेशेंट इज वेरी हैप्पी। नहीं तो पेशेंट बाकी प्रोफेशंस में तो वो रोता ही है, ऑर्थो ले लो, कार्डियक ले लो, दिस इज द ओनली फील्ड व्हेन देयर इज सो मच हैप्पी, देयर इज अ एनवायरनमेंट ऑफ हैप्पीनेस इन द फैमिली, कि एक नई एडिशन हुई है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सो सीइंग ऑल दैट आई रियलाइज दिस इज द बेस्ट थिंग दैट like we should do, you know, as I must go into the, as an obstetrician I must, you know, follow my dream of bringing happiness into the lives of the families and my patients. That is really great, and that is really inspiring as well. And it's great that how you had a support of your family throughout. It's really great to have that. Okay, so moving forward, my next question to you is that even normal people know that menopause क्या है. It's just कि हमें एक certain point of time, basically at the age of 45 to 50, हमें periods आने बंद हो जाते हैं. So ये basic definition तो everyone knows. But if as a doctor I ask you that what actually is menopause, and also Poonam Bhatia ma'am, she has asked the question that she is 49 years of age, but what time menopause starts? So exactly as doctors, how would you tell what is menopause? So let us start now. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी मेनोपॉज होता क्या है। ये कोई बीमारी नहीं है, हम लोगों औरतों के मन में ये एक है कि हाई मेनोपॉज हो गया तो हमारी लाइफ खत्म होगी। सबसे पहले प्लीज लेडीज, इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग विच इज हैपनिंग इन योर बॉडी। जैसे एक लड़की पैदा होती है, वो जब 10-11 साल की होती है, उसके पीरियड्स शुरू होते हैं, उसको हम मिनार्की कहते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है। उसी तरह से ग्रेजुअली ग्रेजुअली by the time she reaches 40 45 50 that reproductive cycle has to end, और वो एंड होता है विद मीनोपॉज। तो मीनोपॉज से सेजेशन ऑफ मेंसेस, मेंसेस खत्म होना इज एन इंडिकेशन कि मीनोपॉज हो गया है। बट उससे पहले बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं जो एक औरत को जानने बहुत जरूरी है। सी क्या होता है, हमारी जो ओवरीज हैं वो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिससे कि जब ओवुलेशन होती है, एस्ट्रोजन से हमारी स्किन मेंटेन होती है, हमारे हेयर मेंटेन होते हैं, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारा कार्डियक प्रोटेक्टिवनेस होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक होता है। दिस ऑल इज डन बाय अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज इन आवर बॉडी। जैसे जैसे लेडी की एज बढ़ती है, 40s में आती है, अर्ली 40s, मिड 40s, ये धीरे धीरे एस्ट्रोजन की मात्रा हमारी बॉडी में कम होने लगती है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सडनली एक ही दिन में एस्ट्रोजन कम हुआ और हमारे को मेनोपॉज हो गया। इट इज नॉट दैट, इट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। तो हम पेरीमेनोपॉज से स्टार्ट करते हैं, जो कि 5 to 8 years before actual menopause होता है। So that perimenopause is the time जब estrogen level धीरे 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 it starts getting less in our body.
तो क्या सिम्टम्स आते हैं? हमारे पीरियड, सबसे पहला सिम्टम होता है हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। जो साइकिल हमारे को 28, 30, 32 डेज में आता था, वो साइकिल अब हमारे को 1.5 महीने में, 2 महीने में आएगा। एंड द फ्लो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। पहले अगर हमें हफ्ता हमारे पीरियड्स आते थे, फिर वो 5 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, 4 दिन होंगे। सो the cycle duration is decreased, it is not coming every month, and the flow is decreasing. Now many a times my patients come to me बहुत heavy bleeding करके आते हैं। वो कहते हैं अब तो महीना खत्म होने वाला है, तो ये तो heavy bleeding तो होगी होगी, पूरा पूरा महीना bleed करते हैं। तो ये मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज पैथोलॉजिकल, दिस इज रॉन्ग। इफ अ लेडी इज ब्लीडिंग हैवीली, वो पूरा महीना ब्लीड कर रही है, या महीने में 15 दिन ब्लीड कर रही है, फिर हफ्ते बाद फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या फिर उसको कॉन्टिन्यूसली स्पॉटिंग हो रही है मेंसेस खत्म होने के बाद, या जब वो सेक्स कर रही है उसके बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है, ये मीनोपॉज का सिम्टम नहीं है, ये समथिंग पैथोलॉजिकल है। Please don't sit at home, just go to your gynec, get your ultrasound done, get your pap smear done, get your internal checkup done. ठीक है? So we should know कि मीनोपॉज में irregular cycle होता है, फ्लो कम होता है। अगर उससे उल्टा हो रहा है तो something is wrong in our uterus, there could be a fibroid, there could be a ovarian cyst. So don't, that is not the sign of menopause, heavy bleeding, intermenstrual bleeding, spotting or post sex, post coital bleeding. Okay, so first symptom मैंने बता दिया, irregular periods होते हैं, duration बढ़ जाती है, मतलब 1.5-2 महीने में आते हैं, flow कम होता रहता है। Then second thing is suddenly आपके hot flushes शुरू हो जाते हैं। वन मोमेंट यू आर ऑल राइट, एंड देन फॉर अ फ्यू सेकंड्स आपका फेस रेड हो जाएगा, कानों से गर्मी निकलने लगेगी, एंड यू सडनली फील हॉट, वेयर इज द एसी इज एट इट्स 20, 22, 24 पे एसी चल रहा है, सडनली यू स्टार्ट फीलिंग हॉट। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द साइंस कि आपका मीनोपॉज आ रहा है, ये पेरीमीनोपॉजल सिम्टम है। Then skin becomes dry, your hair start falling, hair becomes thin, hair start falling, and other thing which I see is कि mood swings बड़े शुरू हो जाते हैं, you become irritable, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, and बेमतलब you become very sensitive, you start taking things at your heart, उसने मुझसे ऐसे बोला, पहले तो वो मुझसे ऐसे नहीं बोलती थी, जबकि यही बात अगर 10 साल पहले कुछ हुई होती, you would not have taken it, but now you become very sensitive. So these are all hormonal changes that are going on in your bodies. And if a woman is suffering from PMS, premenstrual syndrome, तो उसका और PMS बहुत सिवियर होने लगता है, मेंसेस से पहले हेडेक, स्ट्रेस, टेंशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस becomes very much if she is going through premenopause and menopausal stage. Then there is loss of libido. She just has no interest in sex. She cannot be aroused by touching, and she tries to avoid sex. The reason being her vagina dry hona shuru ho jata hai, that sex which she used to enjoy earlier starts becoming painful. So to avoid that pain, she starts avoiding her partner. Communication hoti nahi hai, and because she is avoiding the partner, the rift starts happening between the partners. And all these things then leads to anxiety, depression. वो सोचती है मेरे साथ क्या हो रहा है, why मेरी स्किन तो इतनी अच्छी होती थी, सडनली मेरी स्किन ड्राई हो गई है, एंड मेरे हेयर तो इतने अच्छे ग्लॉसी शाइनी होते थे, my hair are thinning and there is lots of hair fall. So all these things and these mood swings leads to anxiety. Anxiety leads to depression. Because of depression, रात को नींद नहीं आती, she can have insomnia, और बड़ी पैची नींद आती, she gets up in the middle of the night. Then other thing which I have noticed is that bladder control कम होना शुरू हो जाता है. Again, it is all the hormonal changes, frequency of urination increases. At night, she may have to get up once or twice or even thrice to go to relieve herself, to go to the washroom to relieve herself. So all these things irritate her. नींद disturb होती है, insomnia होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होती है, ये सारे चेंजेस आते हैं जब आप पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉजल स्टेज पे होते हो. एंड दीज थिंग्स दैट स्टार्ट हैपनिंग 8 to 10 years before actual menopause starts. तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन लेवल कम होती है, जो हॉट फ्लैशेस आपको शुरू में महीने में एक बार आते थे, जैसे जैसे आपका मेनोपॉज आना लगता है, वो फिर हफ्ते में एक बार आना शुरू करते हैं, एंड द स्टेज कम्स व्हेन इट कम्स ऑलमोस्ट डेली. ओके, एंड when for 12 months, एक साल तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, that means you have reached menopause. तो जब हम कैसे कहते हैं कि this lady is menopausal,
when she has no periods, no menses for the last 12 months or 1 year. That means she has reached her menopause. So she will go through all these phases till she reaches menopause. So here I would like to tell you that this is the second innings in woman's life. So she should take it graciously. Your next question. Thank you so much, ma'am. You explained it so well. In fact, this symptom question that you answered without even asking, this was questioned by Ritu Garg ma'am and Bhavna Kanchan Raizada ma'am, if I pronounce it right. And adding on to Bhavna ma'am's question, she also asked that when we see some symptoms about menopause, what are the precautions that we should take in before after that? Yeah. So now let's come to the second phase. We all know that eventually all of us have to reach menopause. है ना? Don't be afraid. Don't think कि मेरा menopause हो गया, my life is over. Please. Menopause is the time when it is the beginning of the second inning in a female's life. So she should be mentally prepare herself. She should know, every one of us should know कि एक time आएगा जब हमारे periods खत्म होंगे और हमें menopause आएगा. तो how do we prepare ourselves? सबसे पहले do your exercise. कभी भी be physically active. Right from the age of 30-35 आपके बच्चे पैदा होने के बाद अपने आप को you don't have to become obese because जब menopause आएगा again आपका weight बढ़ेगा, particularly the abdominal weight, you know, in the mid हमारे जो पेट में वजन होता है, पेट निकलना शुरू हो जाता है, that is there when you reach menopause. So to avoid that, when you are in your mid 30s, late 30s, early 40s, एक अपना regime बनाओ. That you have to be physically active. However busy you are, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी फैमिली है, you have to look. एक me time हर लेडी के पास होना चाहिए. Every one of us should have that me time. चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो आधे घंटे का हो, वो me time निकालना है. उस me time में आप walk करो, आप योगा करो, आप exercise करो, आप meditation करो, अपना एक schedule बनाओ. एक दिन walk, एक दिन योगा, एक दिन calisthenics, एक दिन aerobics, एक दिन meditation. So that me time every one of us should have. और ये हमारे एक रूटीन में आ जाना चाहिए. जैसे हमारे रूटीन में खाना खाना आता है, हमारे रूटीन में रोज नहाना होता है, हमें तैयार होना होता है, हमारे रूटीन में पार्लर जाना भी होता है. once a month या twice a month all ladies of us, especially in the urban setup, they go to parlors. तो यही एक हमारे रूटीन में आना चाहिए कि डेली मुझे सुबह चाहे मैं आधा घंटा पहले उठूं, मिनिमम 30 मिनट्स मुझे अपने आप को देने हैं. आई हैव टू डिवोट टू माई सेल्फ. मुझे अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, सो दैट व्हेन आई रीच मेनोपॉज मेरे को इतने सिम्टम्स परेशान ना करें. Okay, so physical activity is very important when you are reaching in your perimenopausal and then again menopausal age. Second, एक support group बनाइए. हम सब फ्रेंड सर्कल तो ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई 40 की है तो कोई 35 की है तो कोई 45 की है. हम अपने ग्रुप का एक फ्रेंड सर्कल, एक सपोर्ट ग्रुप बनाए एंड वी सपोर्ट ईच अदर. ये नहीं कि अगर वो बीमार है तो वी जस्ट इग्नोर हर. वी हैव टू सपोर्ट ऑल ऑफ अस. यू नो, रिमेंबर वन थिंग, मेरी नानी दादी मुझे कहती थी औरत ही औरत की दुश्मन होती है. फिर मैं उन्हें हमेशा ये काउंटर करती थी कि एक औरत ही औरत की बेस्ट फ्रेंड भी है. सो एक अपना सपोर्ट ग्रुप बनाइए, अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए एंड उनके साथ आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए कि हम सब मिलके आज ये एक्टिविटी करेंगे, आज ये एक्टिविटी करेंगे. ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी. थर्ड थिंग, एक गायनिक अपने पास जरूर रखिए. See, when you are in your 30-35, अपना गायनिक चेकअप once a year करना शुरू कर दीजिए. उसमें आपका पैप स्मीयर होना चाहिए, आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए. You should, all of us, all of you ladies should have one gynec with whom you are very comfortable. You can go and discuss your problems. And that gynec should be so empathetic that she should listen to your problems and she should find a solution to it. Fourth thing, nutrition. वेरी इंपॉर्टेंट. हम औरतों को लगता है कि बच्चों ने खा लिया, पति ने खा लिया, घर के मेंबर्स ने खा लिया, अब जो बचा हुआ खाना है अब हम वो खा लेते हैं. फ्रिज में जो पड़ा हुआ है, कल का पड़ा है, परसों का पड़ा है, जो बचा वो हम खा लेते हैं. दैट प्लीज, ये अपना एटीट्यूड बिल्कुल बदलिए. दिस एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर. You are very important in social strata, in your social hierarchy, in your life. You are the pillar. Every woman is the pillar of the society and pillar of a home. So उसकी अपनी diet is equally important जितनी कि उसकी बच्चों की और उसके husband की diet है. It is not that you are sitting at home तो जो भी मिलेगा आप खा लेंगे. नहीं, आपकी protein intake adequate होनी चाहिए, fat intake कम होनी चाहिए.
see to it that if you're a non-vegetarian, you have eggs in your diet. And if you are a vegetarian, in that case, perimenopausal age mein, try to take soya and other foodstuffs which elevate the symptoms, which decreases the symptoms of menopause. So इसमें phytoestrogens, that is the estrogens that we obtain from plants, is a very important source of these estrogens which decrease our symptoms. तो इसमें हमारे सोया आता है. तो the atta in your house should be fortified with soya. 5 किलो आटा में 1 किलो सोया का आटा डालिए. सोयाबीन चंक्स लीजिए, फ्लैक्स सीड्स लीजिए, include fresh fruits and fresh vegetables in your diet. Try to avoid anything white. By white, I mean maida, white sugar, white bread. These things should be avoided because जैसे जैसे हमारी एज बनती है, we all tend to, हमारी डायबिटिक होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है. To avoid that, we have not only to keep ourselves physically active, हमारी डाइट एक मेजर रोल प्ले करती है for our skin, for our health, for everything. So all that foods and fruits which have high glycemic index should be taken in very less quantity. तो जब भी आप कोई फ्रूट लेते हैं, आप गूगल करो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है. जैसे मैंगो है, इट इज अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. एनी फूड एंड फ्रूट विच हैज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका शुगर एलिवेट करेगा. So your diet should not have these food and fruits which have high glycemic index. So you should take more of proteins, you should take more of fresh fruits, fresh vegetables, flax seeds is another, legumes is another thing which you can include in your diet. Chickpeas हमारे घर में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. Why not we also take? Chickpeas should be there, which should be included in our diet. So diet plays a very important role if we want to alleviate, decrease our symptoms of menopause. फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, सोशल सपोर्ट. जैसा मैंने कहा कि आपका सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए. दैट सोशल सपोर्ट, सोशल गैदरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बिकम अ रिक्लूस कि अब मैं मेनोपॉज हो गया तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है. नहीं, आपकी लाइफ तो अब शुरू हुई है यार. आपकी सेकेंड इनिंग्स शुरू हुई है. आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई. आपके बच्चे, दे हैव लेफ्ट द नेस्ट, दे आर सेटल्ड. योर हस्बैंड इज ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ रिटायरमेंट. नाउ यू लिव योर लाइफ. दोनों अपने आप दोनों पार्टनर्स जा सकते हो, घूमने जा सकते हो. आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाओ कहीं बाहर जाने का, घूमने का. और सबसे बड़ी बात है, जब मेंसेस की टेंशन नहीं रहती ना दिमाग में, तो आप साइकोलॉजिकली फ्री होते हो कि मेरे को यार सैनिटरी नैपकिन भी लेके जाने, एनी टाइम माय पीरियड्स कैन कम एंड पेट में दर्द होगा. सो मैं तो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ यार अच्छा है ना, अब तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. नाउ यू गो आउट, यू प्लान योर आउटिंग्स. आप अभी से क्यों अपने आप को बुरा समझ रहे हो? You know, I was reading this article one day where it was written that middle age these days starts at 45 and goes up to 60. तो 60 तक हम लोगों का मिडिल एज चलता है. सो लेडीज, यू हैव टू रियली बिलीव इन योरसेल्फ. यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ that you can do it. And once you have that confidence, these symptoms will also go away. That's actually very nice. And in fact, the me time that you mentioned about, I think it is very important for all the women, all the mothers out there, because they get so indulged in their selflessness towards their Yes. family that they forget themselves. And I think, in fact, I have seen that in my mother and women around me also. So I think it is very important for all the women out there. It is not just about menopause; it's about their life too. That me time Yes. is very important. And I think you mentioned a very good point, and you also answered the diet question that uh, or someone from the audience asked about it also. I think I'll just see who was that. See, one of your audience is asking about the bone loss. Yes, I forgot to mention that during menopause, because the estrogen levels fall, एस्ट्रोजन क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. सो जैसे जैसे आपकी एस्ट्रोजन लेवल्स फॉल होती हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. And you know, by the time you reach menopause, as much as 25% of the bone loss is there from our body, leading to osteoporosis and osteopenia. So very important that you include dairy products in your diet, include calcium in your diet, very important. एक स्टेज के बाद, लाइक मैं तो सब 40 प्लस लेडीज को कैल्शियम पे डालती हूँ कि आप 6-7 मंथ्स कैल्शियम लीजिए एक साल में, फिर 3-4 महीने छोड़ दीजिए. देन अगेन फॉर 6-7-8 मंथ्स टेक कैल्शियम. 8 महीने लो, 4 महीने छोड़ो, 8 महीने लो, 4 महीने छोड़ो. प्लस विटामिन D3 बीच बीच में ऐड करते रहो.
जैसे एक महीने में once a week vitamin D3 60,000 लो, then again after 3-4 months start taking vitamin D3 once a week for 4 weeks. So this will to some extent decrease osteoporosis and osteopenia. तो जो बोन्स हमारी ब्रिटल हो जाती हैं कि एक उम्र के बाद जैसे ही लेडी गिरती है फिसलती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, बट इफ यू आर टेकिंग एडिक्वेट कैल्शियम दैट ब्रिटलनेस इन द बोन्स विल नॉट बी देयर, तो वो फ्रैक्चर जो होता है हमारा हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह वो नहीं होगा। प्लस अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप धूप में हो, आपको विटामिन D3 मिल ही रहा है, आप कैल्शियम ले रहे हो, सो दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। प्लस डू वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा अपना चाहे आप 2 किलो या 1 किलो के डंबल उठाइए, आप बाइसेप्स करो, ट्राइसेप्स करो, थोड़े स्क्वाट्स करो, सो दिस विल दिस विल नॉट ओनली मेक योर बोन्स स्ट्रेंथन योर बोन्स, ये आपकी बोन्स तो स्ट्रेंथन करेगा ही, साथ में आपकी मसल्स को भी अच्छा बनाएगा। तो ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जो अर्ज होता है कि आपको बार बार यूरिन करने जाना होता है, वो भी काफी हद तक कम हो जाता है अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, अगर आप अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज स्क्वाट्स वगैरह करते हो। Okay. So I think Meena ma'am, your question has been answered by Sheetal ma'am. Also, Nisha Haryani ma'am has also asked that what are the symptoms or what are the causes that result in premature menopause? सी प्रीमेच्योर मेनोपॉज जनरली इट कुड बी जेनेटिक, आपकी अगर मदर को 35-40 में हो गया है तो वेरी लाइकली कि आपको हो जाएगा। देन अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, सपोज आपकी सर्जरी, आपकी हिस्टेक्टमी हुई, हिस्टेक्टमी के साथ ओवरीज निकल गई, तो नेचुरली यू विल एंड अप इनटू प्रीमेच्योर मेनोपॉज। आपको मेलिग्नेंसी हुई है, आपको कीमोथेरेपी मिल रही है या रेडियोथेरेपी मिल रही है, अगेन दैट विल डिस्ट्रॉय योर ओवरीज एंड यू विल एंड अप इनटू प्रीमेच्योर मेनोपॉज। इसको हम ये भी बोलते हैं premature ovarian failure, POF, premature ovarian failure. तो surgical causes main first, then your radiotherapy, chemotherapy to your genital region, अगर आपको malignancy है और आपकी रेडियो कीमो हुई है तो भी आपको premature ovarian failure होगा। एंड थर्ड इज जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली में आपकी ग्रैंड मदर्स और आपकी मासी और आपकी मदर को premature ovarian failure हो रहा है, आपको भी चांसेस ज्यादा है उसके। Okay, ma'am. That's actually very informative. I think your answer has been answered. Your question has been answered, ma'am. Also, this is my question as well as a question of Nisha ma'am again. That what are the negative and serious effects that women might face during their menopause or in the period of their menopause? सी Some नेगेटिव इफेक्ट्स मैंने adverse आपको, effects. एडवर्स इफेक्ट्स, तो एडवर्स इफेक्ट्स मैंने आपको अभी जो लिस्ट ऑफ सिम्टम्स बताई है ना, मैंने आपको बताया ये सिम्टम्स होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकल, अ लेडी टेंड्स टू गो इनटू डिप्रेशन। सेकंड क्या होता है, एस्ट्रोजन इज अ प्रोटेक्टिव हार्मोन इन आवर बॉडी, ये हमारी हार्ट डिजीजेस को प्रोटेक्ट करता है। एथरोस्क्लेरोसिस जो हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है उसको एक्यूमुलेट करने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। तो जैसे ही हमारा मेनोपॉज आता है एस्ट्रोजन लेवल कम होती है, तो जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल कम होती है दैट प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन इज लॉस्ट, सो द चांसेस ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज इंक्रीजेस एज यू रीच मेनोपॉज। तो जो हमारे को देखो, जो हार्ट डिजीज मेल में 30-35 में होती है, फीमेल्स में नहीं होती है। आप देखोगे कि मेल इन 30s एंड 40s मेल ज्यादा होते हैं हार्ट डिजीज के, बट 50 के बाद दोनों मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ट डिजीज होती है। ऐसा इसलिए होता है कि वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ एस्ट्रोजन when we are in our perimenopausal age, yeah, we have not hit menopause, but जैसे ही that protective effect of estrogen is lost, हम लोगों का cardiac cerebrovascular accidents, heart strokes, हार्ट अटैक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, फ्रैक्चर के चांस हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेनोपॉज, जिससे कैसे बचना है मैंने आपको बड़े अच्छे से डिटेल में बताया है। Yeah. I think Manju, Rohila ma'am and Nisha Rani ma'am, your question has been answered with the complete details. Okay, so next question is by Bhavna Kanchan ma'am. She is saying that her age is 38 and oh, just a second. Yeah, she is saying that her age is 38 and she has been taking anthra injection for family planning, but she has not been getting her periods since 2 years. So, is this safe and should it continue taking those injections? No,
I'm not in favor of these injections because these injections they really cause irregular periods. So हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे irregular periods are because of these hormonal injections or whether we have reached menopause. Yeah. So Bhavna, I would suggest that you stop taking these injections. वेट फॉर योर पीरियड्स टू कम, और अगर 2-3 महीने में पीरियड्स नहीं आते हैं, गेट अ स्कैन डन, अल्ट्रासाउंड करो पेल्विस का, और यूट्रस की लाइनिंग देखो, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कितनी है. अगर वो बहुत थिन है, देन शो टू योर गायनेक एंड शी विल इवैल्यूएट यू वेदर यू हैव रीच्ड मेनोपॉज और इट इज बिकॉज ऑफ दोज इंजेक्शंस. I am not at all in favor of these injections for family planning. Rather go for multi-load or copper T or any intrauterine device. उससे hormonal imbalance नहीं होता. Okay. Thank you so much, ma'am. And in fact, with this, I have a question that personally I have seen some women that who take medications for various reasons to extend their menstrual cycle, extend the period of their menstrual cycle, and they take medications to put a hold on the menopause so that abhi unhe time pe itni jaldi menopause na aaye. So are taking those medications safe and should they take that? सी इट डिपेंड्स. अगर आपके पास यूट्रस है, दैट मीन्स आपकी हिस्टेक्टमी नहीं हुई है और आप हार्मोन रिप्लेसमेंट लेना चाहते हैं, इन दैट केस टेक बोथ द हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. खाली एस्ट्रोजन नहीं लेना, बिकॉज इफ यू विल टेक ओनली एस्ट्रोजन, उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ कैंसर ऑफ द Excuse me, ma'am. एंडोमेट्रियम. हेलो, कैन यू हेयर मी? Sorry to interrupt, but your voice is a little bit lagging. Hello? हेलो, हेलो, कैन यू हेयर मी नाउ? हेलो. Yes, yes. Your voice was lagging. Okay, so what Am I I was audible to saying, you, ma'am? yeah, perfect. Yeah, See, please go ahead. Please go ahead. where was I? You have interrupted me. I was discussing what? You were talking about the um lining, uterus Huh. lining when Uterus. should they take See, it's so medications for? yes. So if you have uterus and you are taking hormones, then take combination of estrogen and progesterone. Never go for only estrogen, because अगर आप खाली estrogen लेते हैं, वो uterus की line पे act करता है, endometrial hyperplasia बनाता है, and it can later lead to cancer of the endometrium. ठीक है? So if you have uterus, good, and you want to कि हाँ मैं बिल्कुल सही लगने चाहती हूँ, I would like to prolong my menopause, then and you want to take hormone replacement, खुद से नहीं लेना, डॉक्टर की एडवाइस से लेना है, and take combination of estrogen and progesterone. But if suppose you have got hysterectomy done, आपके पास यूट्रस नहीं है और आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि रूटीन मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, then you can take हार्मोन्स, और आप उसमें सिर्फ एस्ट्रोजन लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि देन देयर इज नो यूट्रस ऑन विच एस्ट्रोजन कैन एक्ट और उसकी लाइन को थिक कर दे. तो उसमें आप एस्ट्रोजन पैच ले सकते हैं, एस्ट्रोजन स्प्रे ले सकते हैं, एंड एस्ट्रोजन वेजाइनल जेल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं. बट इफ यू हैव अ इंटैक्ट यूट्रस, आपकी हिस्टेक्टमी नहीं हुई है, then my sincere advice, don't take estrogen alone, take combination of estrogen and progesterone to relieve you of your symptoms of menopause, that too also under the expert guidance of a good gynec. Okay. Also, Shafali Arora ma'am is asking that after early menopause and after surgery, urine control begins to decrease. So, what Yes. we can do about that? सी एज आई हैव टोल्ड यू कि जैसे मेनोपॉज आता है, मसल वीकनेस हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाती हैं. सो दैट इज व्हाई मैं आपको बार बार बता रही हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, और वो हमें पहले से ही शुरू करनी है. बिफोर वी हिट मेनोपॉज वी हैव टू मेक अवर मसल स्ट्रॉन्ग. बट सपोज आपने नहीं की, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप वी टेल सर्टेन एक्सरसाइजेस, मेनली कीजेल एक्सरसाइजेस हम बताते हैं. हम कहते हैं अवॉइड कैफीन, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स एट नाइट, to so that you don't have that urge or stress urinary incontinence. But suppose इन सब के बाद भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है और आपका नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो in that case I would suggest कि we have a surgery. What we do is कि हम एक we put a tape, ट्रांसऑब्चुरेटर टेप, टीओटी एक सर्जरी का नाम होता है, वेयर इन मेशलिन प्रोलिन mesh is put just below the urethra to help you get relief of your symptoms. This is a very common symptom, but the females don't come out, you know. वो हमारे पास आते ही नहीं है ये बताने के लिए कि उनको ये सिम्टम हो रहा है, वो घर में ही बैठेंगी, और दे स्टॉप गोइंग आउट ऑल्सो, वो सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाती हैं, और उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि मेरा यूरिन में कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं नहीं बाहर जाऊंगी. सो हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट, प्लीज
consult a good gynae. Or you come to us in Apollo Cradle, South Delhi, Nehru Enclave. We are doing TOT, wherein a proline mesh is put below the urethra, and you within 24 hours you are relieved of your symptoms. So ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका treatment है. You just have to come out and approach. Okay, I think your question has been answered. And okay, so moving forward, I would like to ask that during this menopause time, and अगर हमें जो hot flashes होते हैं, हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन बाय वंदना पराशर गुप्ता मैम. See, how do you prevent the hot flushes? सबसे बड़ी बात है, hot flushes तो होंगे आपको, जस्ट ग्रेजुअली उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी. सो हाउ टू प्रिवेंशन नहीं है, हमें उसको हाउ डू वी हैव टू एक्ट इन सच अ वे कि हमें उसका इफेक्ट कम लगे. सो स्टार्ट वेयरिंग लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स. रात को सोते समय अपना एसी चला के कॉटन की बेडशीट बिछाइए. कई बार इतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं, मैं पेशेंट्स को कहते हैं आइस पैक पिलो के नीचे रखो, गर्दन के नीचे नहीं, पिलो के नीचे रखो, सो दैट उसकी ठंडक आपके दिमाग तक चले. उसके बाद पिलो अपना उल्टा कर लो, वो ठंडा वाला पिलो आपके नीचे आ जाए, और जो आपके सर के नीचे आ जाए, और जो दूसरा हिस्सा है वो आइस पैक के ऊपर चला जाए. इस तरह से रात में अगर आप उसको रोटेट करते रहोगे, सो टू काफी हद तक वो जो आपके हॉट फ्लशेस होते हैं वो कुछ कंट्रोल होंगे. पानी थोड़ा, अगर मैं आपको ये बोलूंगी कि पानी पीकर सो, ठंडा पानी लेकर सो, तो रात को यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है. सो मेनली बेसिकली यही है कि रिमूव योर अंडरगारमेंट्स. ब्रा डाल के तो मैं कभी भी नहीं कहती हूँ. सो लूज पतली सी कॉटन की नाइटी डालिए, एसी चलाइए, अगर एसी नहीं है तो फैन लीजिए, फैन होना चाहिए. ओपन योर विंडोज, लेट द फ्रेश एयर कम इन, एंड पुट एन आइस पैक. फिर भी बहुत दिक्कत आती है तो एक पिलो के नीचे आइस पैक रखो, उससे मैंने देखा पेशेंट्स को बहुत आराम मिलता है. Okay, thank you so much, ma'am. And in fact, Ritu Garg ma'am is asking that menopause के time अगर बहुत ज़्यादा bleeding हो तो कोई medicine. देखो, मैंने पहले भी बोला था कि ज्यादा ब्लीडिंग इज नॉट अ साइन ऑफ मीनोपॉज. मीनोपॉज के, अगर आपको मीनोपॉज के टाइम पे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो कोई पैथोलॉजिकल कॉज है, कोई प्रॉब्लम है अंदर, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, अपना चेकअप कराइए. वो क्या प्रॉब्लम है, आपकी यूट्रस की लाइन तो नहीं बढ़ गई, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो नहीं हो गया, फाइब्रॉइड तो नहीं हो गया है आपको, आपको ओवेरियन सिस्ट तो नहीं बन गया, आपको कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं बन रही है. सो हैवी ब्लीडिंग शुड नेवर बी इग्नोर्ड कि इट इज अ साइन ऑफ मेनोपॉज. मेरे तो पीरियड्स खत्म हो रहे हैं इसलिए मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही है. हैवी ब्लीडिंग इज एन इंडिकेशन दैट देयर मे बी समथिंग रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट देयर मे बी समथिंग रॉन्ग. सो यू शुड गो टू अ डॉक्टर टू गेट योरसेल्फ चेक्ड. वो अपने आप आपको मेडिसिन देगी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए. ऑफ कोर्स ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो हमें कंट्रोल तो करनी है, अदरवाइज यू विल बिकम एनीमिक. She will give you medicine to control the bleeding, and she will investigate you properly to find out the reason why you are bleeding so much. Thank you so much for answering, ma'am. Um, Meena Kent ma'am is asking that is forgetfulness occur during the time of menopause? Yeah, yes, because आप एंग्जाइटी में होते हो, एंग्जाइटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में होते हो, सो यू टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स. तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ ऐसा कुछ होता है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, दिमाग की एक्सरसाइज करो, लर्न समथिंग न्यू. अब क्या लर्न, यू स्टार्ट कुकिंग करो, देख के अपना वो देख के यूट्यूब से या किसी भी कुकिंग क्लासेस को ज्वाइन करके स्टार्ट लर्निंग न्यू डिशेज. ऑलवेज स्टिमुलेट योर ब्रेन. किसी भी चीज देखो, अगर हम शरीर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे को ब्रेन की एक्सरसाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो डू एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन. लर्न न्यू टेक्निक. आप कंप्यूटर चलाना सीखो, अपने बच्चों को बोलो आपको कंप्यूटर चलाना सिखाएं. आप सुडोको खेलो, आप पजल्स सॉल्व करनी शुरू करो. स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल 3 वर्ड्स पजल, उससे ऊपर जाओ. एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन विल हेल्प यू कि जो फॉरगेटफुलनेस है वो धीरे 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 कम होगी. So you don't have to do your physical exercises, but mental exercises again a very important part that you have to do in your menopause. Okay, thank you so much, ma'am. I hope Ritu ma'am, your question has been answered. And Shipali Arora ma'am is also asking that estrogen हमें कब तक लेना चाहिए?
सो इट डिपेंड्स आप कितनी देर तक अपने सिम्टम्स एलिवेट करने चाहते हैं। नॉर्मली मैं 1 या 2 साल से ज्यादा एचआरटी नहीं देती हूँ। और जैसे मैंने बोला है कि खाली एस्ट्रोजन नहीं, अगर यूट्रस है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और अगर यूट्रस नहीं है तो मैं जो एस्ट्रोजन होते हैं मैं 6 महीने से ज्यादा एस्ट्रोजन नहीं देती हूँ, उसके बाद मैं एस्ट्रोजन विदड्रॉ कर लेती हूँ। Okay. So I think your question has been answered. Okay. So okay, Anushka ma'am is asking a very good question that what can she do to improve mood swings during menopause? Diet, very important, Anushka, and this is very good question, I must say. Diet again very important, plays a very important role to to improve your mood swings. Start using soya in your diet. Start using flax seeds in your diet. Start using legumes, chickpeas, white meat, not red meat, but white meat in your diet. Do physical exercises. Physical exercise से क्या होता है कि good hormone is released in our body. Pro hormones are released. एंड दैट ऑटोमेटिकली मूड स्विंग्स ठीक हो जाते हैं। टाइम मिलता है मेडिटेशन करो, ऑलवेज हैव से अ प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दैट लॉर्ड दैट इतना पैंडेमिक भी रहा और आप सब उसमें से ठीक ठाक निकल के आ गए। ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग योर मूड स्विंग्स। ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी, ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, स्टार्ट फॉलोइंग योर हॉबीज। जो हॉबीज आपने शादी के टाइम पे छोड़ दी थी, अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं या यू आर ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, स्टार्ट परस्यूइंग दोज हॉबीज। आपको सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग शुरू कीजिए, आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का शौक है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, आपको गार्डनिंग का शौक है, एनीथिंग दैट कीप्स यू हैप्पी, आपको कुकिंग नई नई डिशेस बनाने का शौक है। सी एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, बेसिकली हमें इसको एंगेज करना है, किसी भी चीज में एंगेज करें, अपनी हॉबीज में एंगेज करें, अपने पैशंस में एंगेज करें, रीडिंग में एंगेज करें। जैसे जैसे आप इसको एंगेज करोगे आपके मूड स्विंग्स, आपका एंगर कम होता जाएगा। So I think that also brings us to very important point that अगर हम अपने mind और अपने heart से happy होंगे, so of course हम physically भी healthy रहेंगे. So I think एग्जैक्टली it's important कि हम लोग अपनी diet and अपने mind को बहुत ज़्यादा अच्छा रखें. So I think your question has been answered, ma'am. Please let us know. Also, uh, Chinwabit Sharma, ma'am is asking that if periods are regular and they last for 6 days, but there's so much blood clots in the bleeding, is there any problem in that? yes, there could be a problem. See, anything in excess is bad. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये एक हमारी दादी भी कहा करती थी, एक्सेस में हर चीज बुरी होती है। एक्सेस में खाना बुरा होता है, एक्सेस में वजन हो जाए तो बुरा होता है। तो अगर एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है, आपको क्लॉट्स निकल रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। गेट योर सेल्फ चेक्ड, गेट योर स्कैन डन, शो टू अ गायनिक, डोंट सिट एट होम। Oh, thank you so much, ma'am. I think, Chinwabit Sharma, ma'am, I think your question has been answered. Please let us know. Okay. So, right. And Khushi, ma'am, is asking that are there any specific exercises that you would recommend to women during this period? कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? Yeah, sure. Khushi ma'am is asking that are there any specific exercises that you would recommend to women during this period? डू योगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डू कीजल एक्सरसाइजेस। कीजल एक्सरसाइजेस होती हैं, वो हमारी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं, और उससे हमारा यूरिन इनकॉन्टिनेंस और यूरिन की प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व होती है। ब्रिस्क वॉकिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। रनिंग मैं हमेशा कहती हूँ इस स्टेज पे अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी हमारी नीज पे इसका असर पड़ता है। तो देयर यू कैन हार्म योर नीज इफ यू आर डूइंग रनिंग, बट ये स्लो रनिंग यू कैन डू। ब्रिस्क वॉकिंग, स्क्वाट्स, वेरी गुड एक्सरसाइजेस। स्क्वाट्स, आपकी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज भी स्क्वाट से हो जाती है। एंड योर योगा, प्राणायाम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस। वॉकिंग इज बेस्ट, ब्रिस्क वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर एनी एज ग्रुप। आप कितने भी बड़े हो जाओ, 70 80, अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग अपनी रूटीन में ले आते हो तो इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। Okay. In fact, someone in the comment section also mentioned that Nisha ma'am also mentioned this walking point. Okay. So one of our Facebook user, they don't have a mention their name, but they are asking that less bleeding period time. So what can be the reasons behind that?
सी अगर आपके मीनोपॉज के टाइम पे लेस ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपका मीनोपॉज आ रहा है। उसके अलावा भी आपको मीनोपॉज नहीं आया, से यू आर इन योर 20s एंड 30s और आपको लेस ब्लीडिंग हो रही है, गेट योर थायराइड लेवल्स चेक। इट कुड बी ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, आपका टीएसएच बढ़ गया है, दैट कुड बी अ कॉज ऑफ लेस ब्लीडिंग। सो और इट कुड बी दैट आप यू आर गोइंग इनटू प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, पीओएफ में जा रहे हैं, दैट कुड बी अगेन अनदर कॉज ऑफ लेस ब्लीडिंग। सो अगर आपको लेस ब्लीडिंग हो रही है एंड यू आर नॉट इन द एज ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज, हियर अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, पेरीमेनोपॉजल एज हमारी स्टार्ट होती है 40 के बाद, 40, 42, 43 टिल 50 इट इज पेरीमेनोपॉजल एज, एंड 50 के बाद कभी भी हम लोगों का मेनोपॉज आ जाता है। अर्ली 50s में 51, 52, 53 में मेनोपॉज आ जाता है। सो अगर इस टाइम पे आपको लेस ब्लीडिंग हो रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल, बट उसके अलावा सपोज इन योर मिड 30s आपको लेस ब्लीडिंग हो रही है, देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट क्यों हो रही है। पर अगर आपको शुरू से ही 2 दिन का ही साइकिल हो रहा है, देन देयर इज नथिंग टू वरी, क्योंकि जब से आपके पीरियड स्टार्ट हुए आपका 2 दिन का साइकिल है, देन इट इज नॉट लेस ब्लीडिंग। पर अगर आपको पहले खुल के पीरियड्स आते थे 5-6 दिन और अब आपको 1 या 2 दिन आ रहे हैं, and you have not reached perimenopause, then it is a sign, it is something to be worried about, and then you have to show and get yourself checked, especially आपका उसके साथ weight gain हो रहा है, आपका पिगमेंटेशन हो रही है, आपका एक्ने हो रहा है, मे बी यू आर गोइंग टूवर्ड्स पीसीओडी, योर गायनिक विल बी एबल टू टेल यू। अगर आपके लेस ब्लीडिंग के साथ साथ सडनली यू आर सीइंग कि आपका वेट एकदम बढ़ गया है, इन लास्ट 2 months यू हैव गेन 6-7 kgs, और आपने कुछ ज्यादा अपनी डाइट भी उतनी ले रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी है, इन स्पाइट ऑफ दैट योर वेट इज इंक्रीजिंग, and suddenly you see there is spots of acne on your face and pigmentation on your face, that means there you are moving towards PCOD. So then you again consult your doctor and find out कि क्यों ये कम bleeding हो रही है, कुछ और reason तो नहीं, and start treatment. See, everything has a treatment. Panic press करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इफ यू मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को, एक गायनी अपनी सिलेक्ट कर लो, मेक फ्रेंड्स विद हर, एनी प्रॉब्लम go and discuss with her. I'm sure there is a solution to every problem. Yeah. Thank you so much, ma'am, for for answering this question so well. And I hope your question has been answered, ma'am. Next question. Nisha Aryan ma'am is asking that what vitamins are good for taking during this whole period. I told you vitamin D very important, कैल्शियम, विटामिन D3 मैंने अभी बताया आपको, इससे पहले बिगनिंग में बताया था, विटामिन D3 तो आपको लेना ही है once a week for 6 to 8 weeks, every 7-8 months में आप विटामिन D3 का कोर्स कर लो। अगर आप सीरम विटामिन D3 लेवल्स देख के करना चाहते हो, वेरी गुड, नहीं तो हर 7-8 महीने में 1 महीने के लिए once a week विटामिन D3 ले लो। विटामिन ई, वेजाइनल ड्राइनेस जो हो जाती है ड्यूरिंग मेनोपॉज, जिससे कि आपका सेक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, इफ यू स्टार्ट टेकिंग विटामिन ई, तो उससे टू सम एक्सटेंट दैट वेजाइनल ड्राइनेस कैन बी ट्रीटेड, कैन बी क्योर्ड। सो विटामिन ई आप लीजिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, सो दिस विल ऑल हेल्प यू। Thank you so much for answering this. Also, Nisha ma'am has another question that irregular periods के क्या reasons हो सकते हैं in this age or even the age during the menopausal time or even before that. मैंने यही बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि अगर आपके पीरियड फ्लो कम आ रहा है या आपका इरेगुलर है, यू मे बी मूविंग टुवर्ड्स पीसीओडी। पीसीओडी ये नहीं है कि आपको टीनेज में ही होगा या आपको अर्ली 20s में होगा, at any stage of your life you can have polycystic ovaries. So अगर आपके irregular periods आ रहे हैं, flow कम आ रहा है, so PCOD is one very important reason of having period irregularities. तो उसमें along with period irregularities हमें क्या दिखेगा, acne दिखेगा, pigmentation particularly at the nape of the neck हमें pigmentation दिखेगी, जिसको हम acantha nigricans कहते हैं। देन हेयर ग्रोथ, अपर लिप, चिन, ये सब हमें हेयर ग्रोथ दिखेगी। तो अगर हमारे इरेगुलर पीरियड्स के साथ ये सब हो रहा है, दैट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स पीसीओडी। सपोज ये सब नहीं है, पीसीओडी नहीं है, देयर कुड बी सम सिस्ट व्हिच इज फॉर्मिंग इन आवर ओवरीज व्हिच इज कॉजिंग इरेगुलर साइकिल्स, so that can be diagnosed only by ultrasound, and any cyst of size less than 5 centimeter does not require surgery.
5 सेंटीमीटर से कम की सिस्ट को हमेशा मेडिसिन से ठीक किया जाता है, एंड जनरली इट इज अ फिजियोलॉजिकल सिस्ट, सो दैट कैन कॉज योर इरेगुलर पीरियड्स, वो आप देख सकते हो। देन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, यू नो, आपके जिंदगी में कोई भी स्ट्रेस आया, जैसे ये पेंडेमिक आया, मेनी पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स, यू हैव लॉस्ट योर नियर एंड डियर वंस, there's change in job चली गई है, all this stress can cause irregular periods or no periods. Believe me, stress plays a havoc in the life of a woman, especially regards to periods. Any kind of stress can cause irregular periods or no periods, amenorrhea, complete amenorrhea, or very less flow. सो अगर हमें कोई पैथोलॉजिकल, मैंने थायराइड भी चेक करा लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, कोई सिस्ट नहीं है, we do not find any pathological cause of irregular or low bleeding, less bleeding, then stress is the main factor. So you have to take care of that. Okay. Thank you so much, ma'am, for answering that so well. In fact, with this, I would like to ask one question on my behalf that since you told that a lot of women go through anxiety, stress, and depression, and it is also one of the symptoms and one of the root causes also. So Yes. how, what can we do to avoid that? Like women do face a lot of, and the main problem is that even if they are facing these things, they don't talk about it. They don't come out and tell to people that they are feeling this, to their doctors or even sometimes their family members. So what we can do about that? मैंने ये शुरू में ही बताया था, सबसे पहले एक अपना सपोर्ट ग्रुप बनाओ, अपनी अपनी एज ग्रुप की सारी फ्रेंड्स, यू फॉर्म अ सपोर्ट ग्रुप, यू स्टार्ट डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम्स विद योरसेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर शेल। कम्युनिकेशन शुड नेवर बी अ प्रॉब्लम। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बताओ, उनके साथ नहीं शेयर कर सकते, अपनी फैमिली मेंबर जिसके साथ आप क्लोज हो, अपनी भाभी, अपनी मदर, टॉक टू योर मदर कि डिड शी हैव दीज सिम्टम्स व्हेन शी अटेन्ड मेनोपॉज। Talk to your bhabhi, talk to your sister-in-law, anybody with whom you are comfortable, talk to them. You know what happens, जब आप बात करते हो and you release your inner things to someone, धीरे धीरे वो आपको लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितनी मैंने इसको बनाया हुआ है। एंड नेचुरली समवन विल सजेस्ट यू कि अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है, एक डॉक्टर के पास चल के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, she will listen to you and more than half the problem will be solved. She will just prescribe you certain vitamins, but the mere fact that she will listen to you very calmly, she will point out certain things to you, that will have such a calming and soothing effect. So सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, आपको एक अपना सपोर्ट ग्रुप बनाना है, एक अपना फ्रेंड सर्कल बनाना है, एक अपना मी टाइम रखना है, आपको अपने आप को ऑक्यूपाई करना है। क्योंकि जब आपके बच्चे चले जाते हैं, आपके हस्बैंड बिजी होता है एट द पीक ऑफ हिज कैरियर, व्हेन द मेनोपॉज हिट्स यू, दैट इज अ टाइम when your children have left the house for their higher studies or for whatever, your husband is at the peak of his career, he has no time for you, and suddenly you realized कि जिस लेडी के ऊपर घर के सारे लोग इर्द गिर्द घूमते थे, सडनली शी रियलाइजेस दैट उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपको इस चीज से बाहर निकलना है, अब आपको अपने लिए जीना है, आपने सबके लिए जी लिया, नाउ इज द टाइम यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ। और उसके लिए क्या करना है, आपको अपना एक स्केड्यूल बनाना है कि अब मैं अपना ध्यान रखूंगी, अब मैं अपनी जो मैं अपनी हॉबीज नहीं परस्यू कर पाई थी, मैं वो अपनी हॉबीज फॉलो करूंगी। यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी बिजी यार, एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्क। Um, Mom, I think there's some network issue. I think there's some network issue with her phone. हेलो, हेलो। Hello, ma'am. This आओ, मेरी एक्चुअली लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया था। क्या एम आई ऑडिबल नाउ? yes, yes, you are clearly audible. आई Perfectly एम audible. रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। No, it's सो okay. It's okay. सो वी वर डिस्कसिंग कि हमें कैसे अपने आप को ऑक्यूपाई रखना है, बिजी रखना है। Yeah.
ओके, सो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन जो आई थिंक हमें ना ही मेनोपॉज में बट इन ऑल साइकिल्स ऑफ लाइफ इट विल हेल्प अस, क्योंकि अगर हम अपनी डाइट, अपने एक्सरसाइज, वर्कआउट रिजीम एंड ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल रखते हैं तो आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक ऐसे फेस करनी पड़ेंगी, चाहे वो कोई ऐसे एडवर्स सिम्टम्स हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो, कोई कॉजेज हो. So I think to all the women out there and to all the young girls who are joining us today, they can tell their mothers and all the older women around them that they have to take care of themselves and they have to put themselves first at this point, because if they don't take care of themselves, how will you take care of your family and your children? So I think Exactly. it is a very good message that you have given to the audience, to all the women. And I think everyone will take this much. And I hope that even I have taken this personally, that I will surely go to my mom right after the session and tell her, just take care of yourself, do some exercises, take care of your diet. So I think Great. everyone must do that. And you have explained all the questions so well. Since we are running out of time right now, I will take just one more question by Nisha ma'am again. That if we have to go somewhere to a function or somewhere far away, so can we extend our menstrual cycle by taking some medications? Yes, you can. You can. Okay, I will so not. I I will not tell the name of the medicine because I'm not supposed to tell you medicine name here on any show. But yes, you can. By taking progesterone medicine, you can delay your cycle by a few days. oh, so I think your question has been answered. So I think since we have already running out of time, I would just like to ask that finally, after concluding the program, do you think that menopause is it that bad? No, I think it is the best phase in a woman's life when she starts thinking about herself. Finally, she gets time for herself. So, अगर आप इसको अच्छे से plan करो, it may turn out to be the best phase of your life, you know. So you just have to plan it. Start planning it from your mid 30s only, because eventually तो यार हर किसी को menopause आना है. तो अगर आप इसको अच्छे से plan करके चलोगे, अपना अच्छे से ध्यान रखोगे, तो आपको ये इतना hit नहीं करेगा, and you will start enjoying your menopause. I think कि अपने teen time को याद कर सकते हैं जब we used to get periods and we used to say why are we getting periods? Like we have to Yes, enjoy. So utilize this time now and enjoy your life, because now you have got yourself. So I yes. think this we can conclude today's program. Ma'am, any message you would like to give to the audience or to the Pinkish Foundation? I would like to tell all of you young ladies that you are very important. All of you are very important. सबसे पहले अपने लिए आप बहुत जरूरी हो और उसके बाद अपनी फैमिली के लिए. अगर आप ठीक रहोगे आपकी फैमिली ठीक रहेगी. So ladies, you please start taking care of yourself. Then only we can all move ahead. Okay. Thank you so much for answering all the questions so well, for explaining all the things in so much detail, and addressing all the issues inclusively. I'm very thankful that you joined us today, and we are really proud, and it's a great. We are really grateful to have you. Thank you so Thanks, much, ma'am, Purnima. for. Player, Thank you player so was much. all mine. I would like to tell all the young ladies here that in case you want to approach me, I'm available on Instagram as a gynecologist underscore specialist, and I'm practicing in South Delhi at Apollo Cradle, Nehru Enclave, and at Rosewalk Hospital. My main specialty is high risk pregnancy, infertility, gynae, laparoscopy surgery, and gynae cancer surgery. So anytime you can contact me by that number which is mentioned on my Instagram page. Okay. I think after that, a lot of people would like to approach you. And My thank pleasure. you so much for joining us today. Anything you would like to say? Me? I've already Yeah. said my best of luck to your Pinkshi Foundation. It is doing a wonderful job. I must congratulate Mrs. Jain for doing such a good job for your for your foundation. She has really done marvelous job, and my congratulations to her and to all your team. It is after all eventually a teamwork. So congratulations to all your team for bringing these such informative sessions for everyone.
Thank you so much, ma'am, for connecting with us today. I hope that that the audience got so much to know with you, and also they got very inspired by you as well. And Thank once you. My again, pleasure thank you was so all much. We are mine. really grateful to have you. Thank you. Thank Bye you. bye. All the best, young ladies. Bye. See you. Bye.